अगर आप कोई रेस्टोरेंट बार में पीना कोलाडा ट्राई कर चुके हो और आपको वो पर्टिकुलर ड्रिंक पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ एक नए कॉकटेल रेसिपी बनाने जा रहे हैं और ये आप घर में ट्राई कर सकते हो। सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और इस ड्रिंक का नाम है कॉफी कोलाडा, बिकॉज हम लोग कॉफी यूज करने वाले हैं और जो रेसिपी है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सो वी वुड बी यूजिंग रम, जो बकार्डी रम, इट्स वेरी ऑप्टिमम प्राइस्ड। एंड उसके साथ हम लोग कोकोनट मिल्क यूज करने वाले हैं, फ्रेश क्रीम यूज करने वाले हैं। कॉफी जो है हम लोग डेविडॉफ का फाइन अरोमा कॉफी यूज करने वाले हैं। एंड वी वुड बी यूजिंग मिल्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ पाइनएप्पल जूस जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस प्रिपरेशन के लिए। तो वी आर टेकिंग ए शेकर एंड वी आर टेकिंग अराउंड 1 फुल टेबल स्पून जो है ऑफ कॉफी। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिर आप 1/3 टेबल स्पून और ले सकते हो, बट वी वुड बी कीपिंग इट लाइक नॉर्मल फ्लेवर। So after coffee, what we are going to pour is we are going to pour around 30 ml of rum. So here we go. We are adding 30 ml of rum, and thereafter we would be adding another 30 ml of coconut milk. So here is our 30 ml of coconut milk. ,30 ml of fresh cream we are going to add. शुगर सिरप जो है इस ड्रिंक में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी वुड बी एडिंग आइस क्यूब्स, सो वी आर गोइंग टू एड अराउंड 15 ml of sugar syrup to it. So this is our 15 ml of sugar syrup. शुगर सिरप बनाने का जो प्रिपरेशन, it's very easy. Equal quantity of sugar and water, you bring it to boil and you can store it in any jar or container. And then finally what we need to add is we need to add milk and pineapple juice. So we would be adding around 60 ml of milk. And we would be adding around 60 ml of pineapple juice. And finally, we would be adding 2 ice cubes. So we are done with 2 ice cubes. Now we have to shake this vigorously for around 2 minutes to get the preparation drink ready. So we have done with the shaking and our drink is all ready. So the density and thickness of the drink looks quite perfect, and taste wise, let me take a sip and share with you guys that how the taste of this particular drink is. If you are a coffee lover, this particular drink is very perfect, because the combination of coconut milk, the combination of coffee, the bit of pineapple which we have added, it gives and the rum, obviously it gives it a very like unique flavor, and the taste is also good. So mind you, this drink is not going to like be refreshing because we haven't added any kind of fruit in it like lemon or something similar, but it has got that richness and exclusiveness of coconut milk and coffee. So do try this drink at home. All the portions are balanced. Make sure you don't make it more sweet, because this sweetness is perfect. 15 ml of sugar syrup that you are going to add, and this is around close to 250 to 300 ml glass size. So again, a very perfect drink, and if you want to have it in the early morning as a coffee alternative, go for this.
Do subscribe to The Single Unicorn if you happen to like this video and want us to make more amazing cocktail and coffee recipes. And do not forget to follow us on Facebook, Instagram, and most importantly, hit that bell notification icon which you can see right below, so that whenever new videos are published in the platform, you are the ones to get notified first. Thanks for watching this video. Bye-bye.